भाई इसको तो पहल दिया भाई। अगर ये मर चुका है तो क्या मैं इसको खून पी सकता हूँ प्लीज? By Jupiter and the saints, you've solved the mystery of these terrible murders. अब आ रहा है तू? Patience, good fellows, I've come to offer help. What help? Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful भाई place. बोट तो अच्छी खासी है तेरी। William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. Yes. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. हाँ, ये जो हमको अटैक कर रहा था, आई थिंक इसका नाम है विलियम। ओके। This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? Subspecies. I must find a place to analyze the blood. अपने हाइडआउट में वही एक अच्छी जगह है। भाई साहब कर क्या रहे थे ये सब लोग यहाँ पे? हाँ सब इतने डरे हुए हैं, ये डॉक्टर इतना चिल कैसे है पर? ओके नाइस म्यूजिक। भाई म्यूजिक हर गेम की मस्त है। मेट्रो रिडक्स की भी म्यूजिक टॉप नॉच थी, मानना पड़ेगा इस चीज को। Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. Okay. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner Bhai, of creature was he? गया विलियम गया। Prey, villain, and victim. Predator. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? No, don't play me for a fool. You used me to locate that skal. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reid. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reid, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reid. Marvelous. Blood sample. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. भाई साहब Well, तो एक तरीका ये प्लेग है। let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a As a physician. physician. Okay. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your पैसा देगा? predicament. कितना पैसा देगा? This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reid, take a moment to consider. The post would be for the night shift.
providing a good explanation for your absence during daylight hours, you'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. या ये डील अच्छी है. What do you say? हम रात में घूम सकते हैं यहाँ वहाँ. लोगों के लिए हम नाइट शिफ्ट पे रहेंगे. Seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Yep. But समझ में ये नहीं आ रहा है, काटने से वैम्पायर में टर्न हो रहा है, तो वो एक बीस्ट कैसे बन रहा है? जैसे ये विलियम जानवर बन गया. ये क्या है? ये कौन सा प्लेग है बे? फ्लू पड़ा है, बट ये किस तरह का प्लेग है? तो ये पेम्ब्रोक हॉस्पिटल. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Skals said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. अरे हाँ, एक चीज मैं भूल गया. Yes, Doctor? बताता एक Dr. सेकंड Reid रुको. here has just returned from the front. He served King and Country. nice Joining us कपड़े here at भाई. Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. This is good news indeed, Doctor. इतना सच नहीं बोलते हैं. Oh, yes. ब्लड ट्रांजिशन. हेलो. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Yes. Duly noted. Can Your assistance she? is required, Dr. Swansea, immediately. More, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Yeah. Coming, Nurse Crane. I'm coming. भाई छोड़ भी दे. भाई कपड़े तो अच्छे दिए भाई उसने. हाँ स्टाइलिश. बोर्ड भी स्टाइलिश है. Take me to the hospital, chapter 1. XP बहुत सा हो गया. Pembroke Hospital District status healthy. Okay. तुम पूरे मैप में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो हेल्दी है, कुछ अनहेल्दी है. कस्टम ऑफर. एक सेकंड मेरा. हम इधर इतनी दूर आ गए. यहाँ से यहाँ आ गए हम. हाँ भाई साहब. इसने कहा था कि रहने को जगह देगा. कहाँ पे? सीन हैम्पटन. एक सेकंड. नर्स जी. क्लैय. यहाँ पर भी एक क्लैय है. रुको. ओह शिट. रुको. यहाँ पर भी एक क्लैय है. कहाँ पे भी तू? ओह साले. ओके. Rotten or receive, each heart contains the seeds of life. Drink at river. Try it all. मतलब हेलो. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. अच्छा ये वैम्पायर बन चुका है ना. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! I will let you bleed. Be more polite. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. Yes. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reid. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. The better plus is hell. Okay. The blood quality. Blood quality indicates how much XP you will obtain from a particular citizen.
द हायर ब्लड क्वालिटी द मोर एक्सपी यू गेट। यस, इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला था। हम बार में देखो कुछ बंदों से मिले थे, तो उनके कुछ कनेक्शंस हैं, ठीक है। अगर उन सारे कनेक्शंस को हमने जोड़ लिया तो हम उनका खून पी सकेंगे, आई थिंक, मुझे ऐसे लग रहा है। और उनका ब्लड क्वालिटी टॉप नॉच है, 1000 एक्सपी है भाई, ठीक है। तो आई थिंक हम इसको समझ रहे हो। हाँ, टू ड्रिंक ब्लड of your prey, you first need to mesmerize them to lead them out of sight from others. Your mesmerize level must be equal or higher than citizen. Okay. आजा भाई। Bring this fading light into the shadows. Ah. The dance of life and death. इसने वश में कर लिया the one of vampire skill. Oh yeah baby. Embrace. Click to embrace Clay, spacebar to release him. Embrace. Yeah. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. Kill you. Kill you. Let's go our first embrace. But क्या इस गेम में कुछ ऐसा भी है कि मतलब अगर हम लोगों को मारते जाएंगे तो हम बैड हो जाएंगे? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। लेट मी नो इन कमेंट्स, क्या हम लोगों को ये एम्ब्रेस जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें गुड सिटीजन बन के रहना चाहिए। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लाइक करना मत भूलना, ओके। लाइक दबा दो, फटाफट से लाइक दबा दो, मुझे पता है तुमने नहीं दबाया। सब्सक्राइब भी करो। To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. मुझे सर मतलब पता नहीं, पर अंदर से फील आ रहा है कि मुझे इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। आई डोंट नो हाँ वाई, बट आ रहा है। एक सेकेंड, हमें उसकी हेल्प करनी है। भूल ही गए उसके बारे में। यहाँ से निकलो, पता चला कोई आ जाएगा। वैसे भी सुबह होने वाली है। यस नर्स जी, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं। आ रहा हूँ। नर्स जी गई? वाह, नर्स मुझे छोड़ के चली गई। तो अभी हमें कहाँ जाना है? क्या अभी हम फ्री बर्ड है, कहीं भी घूम सकते हैं ऐसे? एक तो ये बंदा जंप नहीं करता। ये हॉस्पिटल है आई थिंक, मैप देखते ना। ओके, ये हॉस्पिटल है। Blood trails. Wait a second. ब्लड ट्रेल्स क्या कर रही है यहाँ पे? ओह शिट।
हम कैसे साइलेंट टेक डाउन नहीं कर सकते क्या? What? Don't tell me मेरा एक्सपी चला गया। नहीं नहीं नहीं। भाई मैं रो दूंगा अगर मेरा सारा एक्सपी चला गया होगा तो। हाँ एक्सपी है एक्सपी है एक्सपी है। ये कहाँ गया मैं? ओके यहाँ पे आ गया क्या? हॉस्पिटल में जाना है मेरे को। हॉस्पिटल हॉस्पिटल वेयर आर यू? आई थिंक यही है। जाए क्या वापस फाइट ले क्या? यहाँ पे एक वो ले लिया ना मैंने। क्वारंटाइन। चलो इनसे हम बाद में निपटेंगे। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ इनसे हम बाद में निपटेंगे। पहले हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ भाई आ गया मैं। Skal voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. गार्डन? गार्डन कहाँ पे? ये बताएगा नहीं ना। चलो भाई अंदर। ये रहा। One more skull down. ओ भाई साहब दो है बे। ये क्या है? इसको ले लो पहले। और हट। हट तेरी पैण दी। A photograph. A smiling, loving couple with a few words written on the basic Milton and Pipa forever. New citizen investigation. Okay. Citizen investigation. Are displayed categorized strict. You can start new citizen quest by tracking with access your map. Okay. Ah. Now I get it.
बहुत खतरनाक मामला पानी चल रहा है यहाँ पे। कैसे शाइन मार रहे हैं ना। अब मुझे हाइड आउट पे जाना है यार। कहाँ है मेरा हाइड आउट? सही जा रहा हूँ मैं। क्या है? टॉक मी टू हॉस्पिटल इंटर पैमरो का मिडनाइट गार्डन ऑफ द गुड एंड इविल, ब्रिंग बैक द वॉलेट टू इट्स ओनर। ओ भाई साहब, इधर ये है क्या? ये इसके टैं टैं बूम बूम बूम। आप आजा। अबे रुक जा रुक जा। आना आना। फूफ। क्या कर रहा था ये इधर? मिडनाइट गार्डन ऑफ गुड एंड एविल, गुड एंड इविल, ब्रिंग बैक द वॉलेट टू इट्स ओनर। कोई बताएगा क्या करना है? हेलो टॉक मी टू प्रेमब्लस हॉस्पिटल एंटर द। भाई हॉस्पिटल में आ तो गया मैं, एंट्री कहाँ से हूँ? देखा? ओके, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। अब कहाँ? एक सेकेंड। नाउ व्हाट? वहां से मैं जाऊँ कैसे? वहां से और ऊपर जाने का जगह तो है ही नहीं। कांच के आर पर जा सकते हैं भाई। तो एक सेकेंड, आप समझ रहे हैं मुझे? एक सेकेंड। मैप में देखने दो। यही तो है, ब्रिंग हॉस्पिटल के अंदर ही है, बट जाए कैसे अंदर? अंदर जाने का रास्ता? How to go? How to go? Oh fuck यार, wait a second. So am I leaving? Oh, okay, यहाँ से जाते हैं। It's locked, all right. Okay, ये लॉक है, ठीक है। अब कहाँ जाना है? ओके, मैं गलत जा रहा हूँ। नाइस वन। अच्छा, मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ क्या? नहीं, अब मैं कहाँ पे हूँ?
वाह भाई साहब क्या कंफ्यूजिंग है, एक मार्कर नहीं दे सकते सीधा, मतलब मार्कर दिया है बट फक भाई। ये क्या है? पब्लिक नोट, कवर इच कफ एंड स्नीज विद हैंगर। ओके ये मतलब ये जो फ्लू है ना, टू मेक मास्क टेक अ पीस ऑफ ऑर्डिनरी चीज क्लॉथ 8x6 मास्क बना रहे हैं भाई। ठीक है ये भी लॉक है। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? ओके आगे से राइट, हाँ ओके आगे से राइट आ गया मैं। अब देखो मैं सही तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टीपी करने का ऑप्शन भी आ रहा है, मैंने टीपी भी किया। नाउ व्हाट? नाउ व्हाट? ये साला जाता तो नहीं ना अंदर? कांच तोड़ के घुसना है क्या? कांच तोड़ के घुस जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं है। कुछ तो करना है, एक सेकंड, कुछ तो मिस कर रहा हूँ मैं। ओके ये देखो भाई, अंदर आके से आऊँ मैं गलत डायरेक्शन से अंदर घुसा हुआ आई गेस, मुझे उल्टी साइड घुसना था। एक सेकंड, ये तो रहा, क्या बुद्धू है बे। ठीक है अंदर आ गया, नहीं हाँ अंदर आ गया, अंदर आ गया, अंदर आ गया, ठीक है चलो। ये बंद है, ये भी बंद रहेगा, यस। कोई दरवाज़ा है खुला? अब मैं बाहर आ गया हॉस्पिटल के, वाह जी वाह। यार गाइस कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ ये मार्कर कैसे चलने, मार्कर के साइड से। ये देखो 47 43 44 मार्कर के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाना है मुझे, बट हाउ? यहाँ से ऊपर अंदर तो जा ही नहीं सकता मैं, ये तो दरवाज़ा लॉक है। अब जाऊँ तो जाऊँ कैसे? बाहर से रास्ता है क्या? ये भी लॉक है। हॉस्पिटल या यहाँ पे एक आदमी मारा पड़ा है। डोंट टेल मी मुझे यहाँ आना था। ये लॉक है। I cannot enter. It's locked. ये क्या हुआ? ना ये नहीं है, पर इससे बात तो कर सकते हैं। Good evening. I'm Dr. Reid. Huh. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. राकेश? Now I'm just Mr. राकेश Chadana. चंदन Pawnbroker चांदना and humble guardian चांदना। of this morgue. What do you mean? Oh Indian। You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Your life in London? Single? Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open.
Why close the mall? Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We We keep them in case someone comes looking for the missing. Oh. Sadly, very rarely happens. Okay. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Okay. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. अच्छा बंदा है भैया. Most people fear dead flesh. How did it get? हाँ. An interesting point of view. वही बहुत And बंदे quite an exotic one. डरते हैं body वगैरह से. Most people fear or at least have respect for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. वो भाई साहब क्या लाइन कही है भाई इसने? How did you get the job? How did you get this job? After I left the army, I I worked as an undertaker. undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Milton Hooks. Okay. Have we met before? I don't think so, sir. Why? Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights भाई ago. ना याद मत You दिला. were missing, याद मत and she दिला. was looking for your body. She must be very relieved now. इसको कौन बताएगा? वो रिलीव उसकी सोल हो चुकी है. You are a pawnbroker. A pawnbroker. I expect you get all types of people here. एक Yes, sir. सेकेंड. All kind of people. For I sell all kind of goods. एक सेकेंड. क्या हमें ये लॉक पिक दे सकते हैं जिससे हम लॉक चेस्ट ओपन कर सकें? What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade. I exchange. With what? Some people sell, some others buy. I like to help. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, For the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. क्या वो women भी इससे ट्रेड करती हैं? Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No, I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you Same think there. you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to भाई be कितना helpful. मोटिवेटेड और Quite पॉजिटिव माइंड depressing, बंदा है. wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. एक सेकेंड.
Okay, so you ready So to you're die? ready to die. No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reid, I am a foolish man. But I like to think otherwise. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Codeine is strong analgesic and anti-tussive drug, often used to ease pain and coughing. Epidemic, the remnant shortage of legal medicine. Formula written on a piece of paper seems complex and needs to be analyzed. It's locked, all right.